Hello everybody, welcome and welcome back. So today I'm going to show you how I go from this to this. So you can create this makeup look for Onam, so it's basically Indian soft glam wedding guest makeup look. और अगर आपको soft sophisticated makeup look create करना पसंद है तो I think you are gonna love it. So step by step I will teach you how to do this beautiful gorgeous makeup look using only affordable makeup products. So now without any more blah blah, let's get a bare face. लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमर. मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर. काफ़ी थिक सा सिलिकॉनी बेस सा प्राइमर है. आई कैन से इट्स अ ड्यूब ऑफ नाइका प्राइमर. द टेक्सचर इज क्वाइट सिमिलर. स्किन को थोड़ा सा स्मूथ बना देता है एंड इट्स मेक्स माई फाउंडेशन सिट रियली वेल ओवर इट. टुडे फॉर माई बेस मेकअप आई एम यूजिंग टू प्रोडक्ट्स. वन इज द रियल वुमन tinted moisturizer and the other one is Mars high coverage foundation. The shade is 06. The tinted moisturizer shade is bit dark for me and the Mars foundation is a little light, so I'm mixing both of them to create my customized foundation shade. While mixing, I just remembered that I forgot to color correct, so that I'm using the Swiss Beauty concealer in the shade 01. So this concealer is really creamy, full coverage and blends beautifully. A little goes a long way. I usually prefer to use a slightly darker shade concealer rather than an orange color corrector, because I feel that even if you set an orange color corrector with a loose powder, the orange tint can still shown through after applying foundation. No matter how full coverage your foundation is, some areas of your face can still look grey if you do not apply any color corrector. Now it's time for the foundation and you can see the shade, and while I'm applying my color corrector, the foundation gets little oxidized on my hand, and still it's look kinda light for me, but after doing the whole makeup, trust me, it will look put together and काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है मार्स का ये फाउंडेशन. लाइक आप कह लो 1 to 2 शेड तो ऑक्सीडाइज होता ही है. सो इट्स गिव्स अ फुल कवरेज एंड ब्लेंड सो ईजिली. इट्स ग्रेट फॉर wedding guest makeup look, full glam makeup look. I really love this foundation. The finish of this foundation, it's quite matte, so it gives you a demi matte kind of a finish with a hydrating feel, and after set it with the powder it's look more matte, so don't expect any dewy and glowy kind of a makeup base after applying this foundation. For highlighting I use the same Swiss Beauty concealer in the shade 04. If you watch my earlier makeup tutorials, you will see that I used to skip this highlighting step, but ever since I started doing it, I feel it makes a huge difference. Sometimes the color corrector and the foundation is really close to our skin tone, and after a few hours the foundation can get oxidized and making the whole makeup look bit dull. So applying a highlighting concealer makes the makeup look more put together and it's brighten up the face, and it's not a must do step for everyday or minimal no makeup looks like what I'm doing right now. For a wedding guest makeup look and more formal makeup, I don't think you can skip it. Now I need to set everything because I have applied a lot of cream products. You can't use a compact powder for this, so a loose finishing powder is necessary. I'm going to use the Mars banana loose powder. It mattifies my skin and makes my pores less noticeable. Whenever you use foundation, concealer or color corrector, you should always set your makeup base with a loose powder. Then after that I use this setting spray from Inside Cosmetics to melt everything down. For my eyebrows I use the Mars eyebrow pencil. This is so cheap, just for 69 rupees, and the pigmentation is so good. This is in the shade dark brown. It makes my eyebrows look very defined and I just love it. Now it's time for my eye makeup. So for that I use a kajal near to my eyelashes. तो काजल को लगा के I'm gonna smudge it with my fingers, and you can use any eyeshadow brush to smudge your काजल. तो मैं काजल को लेकर टाइट लाइन भी कर रही हूँ एंड मेरे लैश लाइन के क्लोज भी अप्लाई कर रही हूँ काजल को लेकर. उसके बाद I'm gonna use the Mars Dance of Joy eyeshadow palette in the shade 01. It's an brown neutral tone eyeshadow palette. I really love this palette. The pigmentation of this eyeshadow palette is really good. So I use the light transition shade for my crease. उसके बाद I'm gonna use the dark brown shade for my eyelid, and I'm gonna create a very soft brown smoky eye makeup with a wing liner. So this is what I'm trying to do, and
एक छोटा सा फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश को लेकर डार्क ब्राउन शेड को मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके बाद दोनों शेड को ही मैं ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद लैक्मे का इंस्टा लाइनर यूज़ करके आई एम गोना क्रिएट अ शार्प विंग लाइनर। दिस eyeliner is never gets old. Till date now no brand has been able to give us an eyeliner with such a fine tip ब्रश। देन उसके बाद मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड लोअर लैश लाइन पे काजल को स्मच कर रही हूँ ब्राउन आई शेडो को लेकर। देन आई एम गोना यूज दिस आई लैश कर्लर फ्रॉम मीशो। दिस इज आई गॉट फॉर 99 रुपीज़ एंड आई लैश कर्लर मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। उसके बाद मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मार्स का डबल ट्रिबल मस्कारा। यू एक्चुअली डोंट नीड एनी आई लैशेज एक्सटेंशन और एनीथिंग इफ यू अप्लाई दिस मस्कारा, trust me guys, this is so good at this price range. After that, for blush I'm gonna use Rimmel London blush in the shade 003 Wild Card. This is a beautiful pretty pink shade for brown skin tone like me and ये पूरा का पूरा एक मैट ब्लश है, इसमें कोई शिमर शेड्स नहीं है। दिस इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टू फाइंड दिस ब्लश ऑनलाइन क्योंकि ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है। उसके बाद फॉर ब्राउन्जर मैं रिमल लंडन का ब्राउन्जर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज ऑल्सो इन द शेड 003। कुछ दिन पहले ये मुझसे टूट गया है। दिस इज अ प्योर मैट ब्राउन्जर एंड द शेड इज़ सो गुड फॉर ब्राउन स्किन टोन लाइक मी एंड बहुत ही मक्खन की तरह ब्लेंड होता है ये ब्राउन्जर। बहुत ही फॉर्मूला इसका बहुत ही सॉफ्ट है। उसके बाद लिप लाइनर के लिए मैं चोको बटर शेड यूज़ कर रही हूँ मार्स का। करेंटली आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस लिप लाइनर। मैं हर लिप कॉम्बो में आई एम यूजिंग दिस लिप लाइनर। ये हर कोई लिपस्टिक के साथ जाता है। दिस इज़ द लिपस्टिक इन द शेड 17, आई थिंक ग्लिटेज शेड है इसका। ये मार्स का पॉपस्टर लिक्विड लिपस्टिक रेंज में से है। दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल लिक्विड लिपस्टिक दैट आई एवर यूज। लिपस्टिक लगाने के बाद फिर से मैं लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आई डोंट नो वाई, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस वन। उसके बाद हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर। दिस इज़ सो गुड एंड इस प्राइस रेंज में आपको ब्लाइंडिंग नॉन चंकी शिमरी हाइलाइटर चाहिए तो गो ग्रैब दिस वन। दिस इज स्टिल आई एम यूजिंग दिस, नो बडी टॉक अबाउट दिस हाइलाइटर दैट मच एंड दिस इज काइंड ऑफ अंडररेटेड वन. This is the inside makeup fixer. It's an alcohol based makeup fixer. If it sets my makeup really well, then no matter how strong the fragrance is, it won't bother me at all. सारे प्रोडक्ट का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. And if you like this makeup tutorial, do subscribe to my channel. Bye guys, this is the final finished look and मिलते हैं next video में. तब तक के लिए take care of yourself, take care of your family and bye.